last November in their international meeting. That was really an honor, and that was because कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस लर्निंग के लिए टूल्स इस्तेमाल करती है, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, एंड द वे इट कम्युनिकेट्स विद इट्स स्टूडेंट्स, दैट हैज़ सरप्राइज्ड एवरीवन. तो आई वाज देयर इन द मीटिंग, लोगों ने पूछा कि आप कैसे काम करते हैं. सो वी एक्सप्लेन, and they were really surprised that we are dealing with thousands of students, not tens of hundreds of students, but thousands of students. They were surprised कि कंप्यूटर साइंस में एक वक्त में CS 101 में 30,000 के करीब बच्चा जो सा पढ़ रहा है. So that shows the strength of our software, LMS जो handle करता है उनको, and the network infrastructure which handles all these communications. So that was really surprising for them. This is just beginning, and I hope that Virtual University is on a way of innovation. Now, artificial intelligence is another area where there are a lot of excitement in future, but there is a lot of fear as well. So, particularly जो educational institutions हैं वो थोड़ा सा खौफ में है कि AI के आने से उनके teachers redundant हो जाएंगे, weaknesses एक्सपोज हो जाएंगी और बच्चे जो से ना उससे अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करेंगे. बट सर, आई टेल यू, वी आर टेकिंग इट एज अ पॉजिटिव, एंड वी आर इनकॉर्पोरेटिंग AI, एंड वी आर डेवलपिंग अ सिस्टम वेयर a personalized learning experience will be available for the students, a platform which we will develop जो कि बच्चों की और टीचर्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करके उनको गाइड करेगा और उनको बताएगा कि अब आपने अगले कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, which will help you to achieve your goal in a shortest possible time. The same AI is we are at the moment trying to implement in our content delivery, not only the delivery but the development of content, so that the student will get the right material. So that's where we are heading. I'm really happy to share that since Virtual University is a federal university, CDA has allocated a piece of land in Islamabad to establish our principal office over there, and we plan to establish state-of-the-art production house there as well in our head office. And inshallah, Allah ने चाहा तो हम आपकी खिदमत से भी हम आपकी experience से भी हम फ़ायदा उठाएंगे in establishing those ones.